Hello students, let us continue with the operators lecture. Now we will be discussing a program which will explain us the conditional operator. Previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ conditional operator theoretically explain ਕੀਤਾ ਸੀ. Now we are discussing a program that is using your conditional operator. We have written the two header files here. We have declared three variables a, b and max. If you have noticed, I have declared three variables in a single statement. ठीक है, जे single statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ variable declare करने हों ਤਾਂ variables ਦੇ ਵਿੱਚ comma पाया हुआ है a, b, max and the semicolon. This specifies end of statement. उस तो बाद simple message print कराया, enter value of a ਦੀ value input करवाई, enter value of b ਦੀ value input करवाई. Now this is your conditional operator. ਹੁਣ conditional operator ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ. This is your condition, the first value and the second value. If a is greater than b, whatever value you give to a and b, अगर a वाली condition evaluate true होएगी ਤਾਂ a value execute होएगी. अगर a is greater than b false होएगा तो b वाली value execute होएगी. ठीक है, suppose I write side by side the output of this program. So if it will be executed like this, enter value of a and I give some value a to 17 value to a. उस तो बाद दोबारा program message आया, enter value of b and suppose I give it a value 6. ठीक है, now there are a दी value कितनी होगी 17, b दी value होगी 6. So a is greater than b. Yes, a is greater than b because a is 17 and b is 6 ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ कीबोर्ड तो input करवा रहे हैं. So a will be this statement will be executed. So this statement will be executed means आ वाली value max variable ਦੇ ਵਿੱਚ store होएगी. So a will be stored in max. So the output will be greater number is 17. ठीक है, बिकॉज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मैक्स प्रिंट करवाया है. सपोज यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वंस अगेन, एंटर वैल्यू ऑफ ए, सपोज आई गिव इट अ वैल्यू 170, एंटर वैल्यू ऑफ बी, आई गिव इट अ वैल्यू 600. in this case a is smaller than b, so a is greater than b. No, this condition is evaluating false because a is not greater than b, so b, this will be executed. So b will be copied into max. So output की आएगी greater number is max ਦੇ ਵਿੱਚ कादी value आई है b दी value. So greater number is 600. So this will be the output of this program. So greater number is 600. So this is the way कि conditional operator execute ਹੁੰਦਾ है. There are three things to it. There is a question mark and a full colon. There are three things to it, so you have to take care. This is how the conditional operator works. Now let us continue with the logical operators. Now logical operators, I told you there are three type of logical operators: and, or, and not. Now these are the mathematical operators as well, like because and is working when both of the condition is true, then and will evaluate to true. ठीक है, if one of the condition is false then the anding will not turn out to be true. So ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, and, or and not. ਗੇਟਸ ਅਗਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡਿੰਗ, ਔਰਿੰਗ and not ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੈਲੂਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, now suppose I make a table for and. I will explain it for one and the rest of the things you can follow with the book. Suppose ਅਸੀਂ and ਲਈ discuss ਕਰਦੇ हैं. So let us say this is your expression 1, this is expression 2. ठीक है, and here
we are ANDing expression 1 and expression 2, and this is the result of it. Okay. Now there are, suppose I write both of the conditions are false. Okay. First one is false, the second one is true. The first one is true, the second one is false, and both of the conditions are true. So when you will do the ANDing, okay, both are false, the answer will be false. If one of them is also false, the answer is false. Here in this case also it is false, and if both are true, the answer will be true. So in programming language, when you say false, it evaluates to 0, this also evaluates to 0, this also evaluates to 0, and this evaluates to 1. ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਬਲ ਐਂਪਰਸੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, एक्सप्रैशन 1 तो एक्सप्रैशन 2। हुण एक्सप्रैशन 1 अगर फॉल्स वैल्यूएट करता है तो सैकेंड एक्सप्रैशन भी फॉल्स वैल्यूएट करता है, तो फॉल्स मीनस फॉल्स वैल्यू एंड एवैल्यूएशन इज 0। ठीक है, अगर एक कंडीशन फॉल्स और एक ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू, देन अगेन इट विल बी फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। एस एंडिंग दे विच अगर दोने कंडीशनस ट्रू होणगियां तां ही आंसर ट्रू आउंदा है, तो एवैल्यूएट 1 हुंदा है। Now there are two conditions। हुण मैं सिंपल एक एग्जांपल दे के समझावां। सपोज A दी वैल्यू 8 है एंड B दी वैल्यू 6 है एंड C दी वैल्यू सपोज आई से 4। ठीक है, A is greater than B and B is greater than C। हुन A is greater than B, yes, and B is also greater than C। ठीक है, so this is also true, this is also true, दोनों expression true evaluate कर दे, this is also true, this is also true, so answer will be true or you say 1। अगर इन्हां दोनों चो एक condition false हो जाए, suppose I say I make this C as 7। ठीक है, A is greater than B, A true है, लेकिन B is greater than C, A true नहीं है, false हो गया। So एक condition true है, एक condition false है, एक condition true है, एक condition false है, answer will be false and we will be evaluating to 0। इसी तरह अगर A false हो जाए, A true हो जाए, then भी 0 है। अगर दोनों false है तो then definitely answer 0 है। This is how ending works। ठीक है, हुण similarly ending हो गई, ऑरिंग हो गई एंड नॉट। ऑरिंग दे विच की है, ऑरिंग दे विच अगर एक भी कंडीशन अगर मतलब ट्रू है, फॉल्स ट्रू हो जाए तो आंसर विल बी ट्रू। नाउ इंस्टेड ऑफ एंड सपोज आई से लेट इट बी द टेबल ऑफ और, एंड असी एंड नहीं कर रहे, असी ऑरिंग कर रहे हैं। सो आई पुट अ pipe sign in front of in between the expression 1 and expression 2। now in this case false and false or false, the answer will be false, false or true, answer will be true, true or false, answer will be true, true and true, answer will be true। so 0, this will be 1, this will be 1 and this is again 1। ਹੁਣ ऑरिंग दे विच तुसी देखो B अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर एवैल्यूएट ट्रू हो जाता है एंड वी एवैल्यूएट टू वैल्यू 1। ठीक है, इस केस 0 सिर्फ उदों आता है जो दोनों कंडीशनस फॉल्स होणगियां, एक्सप्रैशन फॉल्स एवैल्यूएट करेगा तो 0 वैल्यू, 0 मीनस फॉल्स, 1 मीनस ट्रू। दिस इज अ बूलियन वे टू एक्सप्लेन थिंग्स, है ना। सो दिस इज हाउ ऑरिंग विल रन। ठीक है, एंड नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन साइन। ये बिल्कुल उल्टा करता है, अगर कोई वैल्यू ट्रू है एंड यू पुट अ नॉट इन फ्रंट ऑफ इट, इट एवैल्यूएट्स टू फॉल्स, एंड इफ सम वैल्यू इज फॉल्स एंड यू निगेट इट, निगेशन है बेसिकली, दिस विल एवैल्यूएट टू ट्रू। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट पार्ट ऑफ एक की लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह यूज होंगे हैं, एंडिंग, और एंड नॉट।
you will be using these operators as and when needed in the programs further. ठीक है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ one of them is false, depending upon कि तुसी ORing कीती है या ending कीती है. ठीक है, and after this, now let us move on to the next type of operators, that is bitwise operators. In our C programming we have so many bitwise operators. So bitwise AND, symbolized by ampersand sign, bitwise OR, exclamation sign, and bitwise exclusive OR by a caret sign, bitwise ones complement, tilde sign, shift left and shift right. ठीक है, आज 6 थोड़े bitwise operators है, and I've made a table here, A, B, A and B. ठीक है, this is bitwise and A or B, this was this is bitwise OR, and A caret B, this is exclusive ORing. ठीक है, ਇਹ ਬੂਲੀਅਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਟੇਬਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ 0 0 means false and false, so false and false will evaluate to false, false and true false, true and false will be again false, true and true will be true. This is ending. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ORing ਕਰਾਂਗੇ. 0 or 0 is 0, 0 or 1 is 1, 1 or 0 is 1, and 1 and 1 is 1. 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ true ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਤੇ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ false ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं. Then we move on to this exclusive OR, false and false, 0 and 0 will be false, 0 and 1, that is false and true will be true, true and false will be true, true and true will again be false. ठीक है, so you have to take care of this कि ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਦੋਨੇ false है ਤਾਂ भी false है, अगर दोने true है ਤਾਂ भी answer false है. So this is exclusive OR. This is the table which is explaining us the bitwise operator. Now in your first year you must have learnt and the basic how to change a normal number into 0 and 1 form. Suppose this is number 5. ठीक है, so if I have to convert it into a binary number, so how you change it? So it is 2 2s are 4 and value left behind is 1. ठीक है, 2 2s are 4 and 1 is left behind, and 2 1s are 2, so nothing is left, it is 0. ठीक है, so the expression is 101. So 101 is basically symbolizing what? 5 value. ठीक है, so if I take another variable, suppose I take 6 and I convert it into a binary form, 2 3s are 6, nothing is left, 2 1s are 2, so 1 is left. Oh, 1 1 0, so 1 1 0 is evaluating to 6. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ending ਕਰਨੀ ਹੈ, so this will be suppose ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 101 ਹੈ 5 is A and 1106 is B. So you will write here A and B. So A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 101 and 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 110. ठीक है, so ending करनी है सी bitwise ending. So 1 1 1 1 is 1, the answer is 1. 0 and 1, 0 and 1 evaluates to 0, and 1 and 0, 1 and 0 will evaluate to 0. So the answer will be 1 0 0. So if you will do A and B, the bitwise ending if you are doing, so you will get 1 0 0. So 1 0 0, if you can convert into a decimal counterpart also, you can multiply it with 2 to power 0, 2 to power 1 and 2 to power 2. So you can change this conversion if you want to convert into decimal counterpart, but this is the binary number 1 0 0. ठीक है, so this is how these bitwise operators are working. They are a little bit complex. It is easy for
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਭਲਾ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ, you need to have an idea of the bitwise operators. So this is how the bitwise operators are working.